Okay, hello, good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Well, let me know in the chat box. Am I clearly audible and visible to all of you? Is it fine? My audio and my video? Yeah. Okay. Am I clearly audible and visible to all of you? I hope your preparations are going on in full swing. बेटा समर के समर सीजन चल रहा है, खूब सारी छुट्टियां मिल रही हैं, है ना? तुम लोग अच्छे अच्छा खाना भी ट्राई कर रहे होगे, राइट? और मैंगो, इट्स द सीजन ऑफ द मैंगो, सो आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम. एंड साथ साथ में हमें अपनी एनएसटीज प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप करना है. सो आई एम हियर बैक विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन. आपको ये तो पता है कि हमारी आंखें जो हैं उन्हीं की हेल्प से हम इस सुंदर सी दुनिया को देख पाते हैं. But what is the actual mechanism involved in the process? So in this lecture, we are going to discuss this thing. Yeah, yes, sir. Hello, beta. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so are you all excited to learn a very new thing today? Maybe शायद तुमने इस चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा. हाँ, सर पता है कि हम आंखों से देख तो पाते हैं, बट हमारी आंखें इस दुनिया को देखती कैसे हैं? So आज हमारी डिस्कशन का यही टॉपिक होने वाला है. Okay, so be full of energy and let's start with the content. Okay, so you guys would have seen this diagram in many books, that is the structure of the human eye. Okay, so beta human eye mein, if you guys know what is the diameter of the human eye, any one of you is aware what is the diameter? What is the diameter of the human eye? So guys, please remember that the diameter of human eye is about 2.5 centimeter. This is the diameter. अब तुमने मैथ तो बेटा तुम सबकी स्ट्रांग होगी तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द रेडियस, डिवाइड द डायमीटर बाय 2 and the value will be like 1.25 centimeter. That is the radius of the eye. So हमारी जो eyes होती हैं, they are spherical in shape, right? अब जो हमारी eye होती है बेटा उसमें तीन, the eye wall, right? It consists of three coats. क्या होते हैं बेटा? तो तीन कोट्स होते हैं हमारी आई में. ओके, सो ये कोट का मतलब क्या हुआ? सो बेटा यू कैन सिंपली से कि जो वॉल ऑफ द आई हेड कंप्राइजेस ऑफ थ्री लेयर्स. द आउटर फिब्रस लेयर दैट फर्दर कंटेन्स स्क्लेरा and your cornea, then the middle vascular coat that consists of choroid. Okay, is it given over here? So right here you have the choroid, the vascular layer. So you have choroid, you have iris, and you have the ciliary body. You have the iris and you have the ciliary body. So these three come under the middle coat, and finally you have the inner neural coat that only consists of retina. So मैंने क्या बताया बेटा, human eye में the diameter is 2.5 centimeter. It further contains three coats. The outer fibrous coat that has sclera and cornea, the middle coat that consists of your choroid, the iris and the ciliary body, and the innermost nervous coat that contains retina. I hope this thing is clear to you. So बेटा तुमने मे भी बचपन से इस चीज को पढ़ा भी होगा कि क्या होता है गाइस. आई टेल यू, जो हमारी लाइट आती है that gets into the eye, okay, it gets further refracted by the lens inside the eye, and जो लाइट होती है बेटा वो हमारी फोकस हो जाती है कहाँ पे? सो वो बेटा हमारे रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है. सो वी एक्चुअली नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना. आई होप ये सब तुमने पढ़ा भी होगा बेटा. लाइट आती है, हमारा जो कॉर्निया है और लेंस है दोनों मिलकर उस लाइट को फोकस कर देते हैं ऑन द रेटिना. जिस जगह पे बेटा रेटिना पे जाके लाइट स्ट्राइक करती है वहीं पे बेटा एक रियल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है और हमारा दिमाग उस रियल इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके देखता है. करेक्ट? तो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना. ओके, तो रेटिना में बेटा आपके पास क्या होता है? रेटिना से बेटा, ओके, दिस लेयर, द येलो कलर्ड वन इज द रेटिना, एंड फ्रॉम द रेटिना ओरिजिनेट्स द ऑप्टिक नर्व. क्या ओरिजिनेट करती है बेटा? ऑप्टिक नर्व. So here you have the optic nerve. This is your optic nerve, right? Yeah, optic nerve. So guys, what we need to know is the structure of the retina. तो रेटिना में बेटा अगर हम अंदर से बाहर की तरफ बढ़ें तो कैसा होगा? जैसे लाइट बेटा इस डायरेक्शन से आ रही होगी, राइट? सो हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. So सबसे पहले you will have the epithelium. You will have this epithelium, right? So you will have the pigment epithelium. Above it you have the photosensitive cell. What you have? You have the photosensitive cell. Okay, you have the photosensitive cell. Above it you have the bipolar neurons. Bipolar neurons के ऊपर present होते हैं बेटा ganglion cells, and the ganglion cells are further connected to the optic nerve fibers. And this optic nerve fiber, it goes to your brain, it carries out the signal of vision to the brain, and that's how you are able to see this.
बट बेटा अभी हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, अभी हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे सर, कि बेटा ये रॉड सेल और कोन सेल में ऐसा क्या है कि लाइट को इस तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट? दे आर जस्ट लाइक द सेंसर, दे आर द फोटो सेंसिटिव सेल्स, दे आर द सेंसर जो लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। सो बेटा इनकी जो फोटो सेंसिटिविटी है ये कैसे ओरिजिनेट होती है, व्हाट इज द पॉइंट? ओके, या सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी आंख में प्रेजेंट होते हैं रॉड सेल्स एंड यू हैव द कोन सेल्स। लेट्स स्टार्ट विद द रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स का काउंट कितना होता है? इट इज अबाउट लाइक 110 to 125 million. Okay, तो this much number of rod cells you have in your eye. बेटा रॉड सेल के अंदर एक फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। क्या नाम होता है? रोडोप्सिन। गाइस दिस रोडोप्सिन पिगमेंट इज फर्दर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज ऑप्सिन, you have opsin which is the proteinaceous part, opsin, and then you have the retinin. Retinin. Guys, ये retinin क्या होता है? So retinin is nothing, it is just the aldehyde derivative of vitamin A. Okay, it is the aldehyde derivative of vitamin A. So guys, vitamin A का नाम होता है retinol, उसी से बनता है बेटा retinal, जिसे आप retinin भी कहते हो। तो this is also called as retinal. Okay, so this is also called as retinal. So again we repeat करते हैं बेटा, what is the count of the rod cells in our eyes? So 110 to 125 million rod cells are there in our eyes. Okay, now rod cell के अंदर एक photosensitive pigment present होता है जिसका नाम है rhodopsin. Rhodopsin is further made up of retinal, that is the derivative, aldehyde derivative of vitamin A or retinol, and you have the protein जिसे हम बेटा opsin कहते हैं। So बेटा रोडोप्सिन का जो कलर होता है ये बेटा पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? तो रोडोप्सिन इज अ पर्पल कलर्ड पिगमेंट। रॉड सेल्स जो होते हैं बेटा हमें पुअर लाइट या डिम लाइट में विजन प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प अस टू सी इन वेरी डिम लाइट और इन पुअर लाइट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। या यू गाइस कैन मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तुम्हें नोट्स तो बेटा बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है? एनी डाउट टिल हियर? कुछ पूछना है यहाँ तक? Anything that you want to ask? Okay, I hope this much is clear to all of you. Now let's talk about the cone cells. Cone cells क्या होते हैं? So cone cells का बेटा काउंट जो होता है ये रॉड सेल से कम होता है। Okay, it is about like 6.3 to 6.5 million. Okay, this much number of cone cells you have in your eyes. Cone cells के अंदर बेटा cone cells जो हैं ये हमें ब्राइट लाइट और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को देखने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते हैं? हमें ब्राइट लाइट में और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। सो कोन सेल में बेटा तीन तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द कोन सेल्स। द फर्स्ट वन इज पायरोप्सिन, पायरोप्सिन। द नेक्स्ट वन इज योर आइरोप्सिन, आइरोप्सिन, एंड द थर्ड वन इज द साइनोप्सिन, साइनोप्सिन। तो सर ये कौन सा कलर को देखने में हमें हेल्प करते हैं? तो बेटा पायरोप्सिन हमें रेड कलर को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, आइडोप्सिन बेटा हमें ग्रीन कलर को देखने में हेल्प करता है, और जो साइनोप्सिन है बेटा ये हमें ब्लू कलर को देखने को मिलता है। सो इफ यू लुक एट हियर यू आर कवरिंग अ वेरी मेजर पोर्शन ऑफ द विबग्लोब ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हमारी आईज बेटा सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन। तो बेटा यही पिगमेंट्स हमारे उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को, विबग्लोब स्पेक्ट्रम को बेटा कवर कर रहे हैं। Okay, I guess I've missed. Okay, I've written the wrong spelling actually. ठीक है, it is porphyrosin, porphyrosin. ठीक है, porphyrosin. Okay, sorry, I had written a wrong spelling. Okay, still it is wrong. It is Okay, I'm really sorry. It is porphyrosin. ठीक है, porphyrosin. I'm speaking it right. I'm writing it wrong. ठीक है, तो porphyrosin red color impact करता है। So these are the three pigments that you have in the cone cells. Okay, now let's understand the further mechanism. Okay, चलो बेटा आगे का मैकेनिज्म समझते हैं। तो गाइस जब हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है तो इट गोज एंड लाइक द लाइट गेट्स फोकस्ड थ्रू द आई लेंस ऑन द रेटिना। बेटा रेटिना पे जैसे ही आपकी लाइट स्ट्राइक करती है इट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। जैसे ही बेटा लाइट आपकी रेटिना से स्ट्राइक करती है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लाइट के प्रेजेंस में बेटा जो रोडोप्सिन है ये स्प्लिट कर जाते हैं रेटिनल और रेटिनिन एंड ऑप्सिन में। सो नाउ दिस डिसोसिएशन इंड्यूसेस सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन ऑप्सिन। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। हियर यू हैव द ऑप्सिन एंड रेटिनिन टुगेदर मेकिंग द रोडोप्सिन पिगमेंट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
the dissociation happens, which brings out certain changes, certain conformational changes in the opsin protein. अब बेटा यही चेंजेस क्या करते हैं, यही चेंजेस बेटा अगर आपको पता हो तो यही चेंजेस बेटा आपकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को चेंज करेंगे एंड दे विल हेल्प टू induce an action potential into the nerve cells. ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. अब सर एक्शन पोटेंशियल क्या है, तो गाइस जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच लाइक द ओल्ड वीडियो ऑफ माइन जिसमें मैंने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इस नर्व कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ाया था. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज repolarization, what is hyperpolarization, what is resting potential, what is action potential. तो इन दैट वीडियो मैंने इस सारी चीज को बहुत डिटेल में बताया है. ओके, सो आफ्टर द वीडियो एंड आई विल ऑल्सो पिन दैट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इनटू द चैट बॉक्स, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. सो गाइस अभी बस हमें इतना ही समझना है कि ऑप्सिन से रेटिनिन की डिसोसिएशन की वजह से बेटा आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाता है. नाउ यही एक्शन पोटेंशियल से बेटा एक इंपल्स जनरेट होती है विच इज फर्दर सेंड टू द ब्रेन. ओके, सो अब क्या होता है सर, तो जैसे आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है थ्रू दी बाइपोलर सेल्स, ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है बेटा आपके ऑप्टिक नर्व से आपके विजुअल कोर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन तक जाता है. दैट इज अ विजुअल रीजन, दैट इज अ ऑसिपिटल लोब ऑफ द फोर ब्रेन. बेटा फोर ब्रेन में अगर आपको पता हो तो यू हैव द फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब. सो जो ऑसिपिटल लोब होती है बेटा ब्रेन की, जो कि आपके पीछे वाले रीजन, इस पिछू रीजन में है बेटा, तो इसी रीजन में बेटा आपके ऑप्टिक नर्व जो है वो वहीं से जाके कनेक्ट करती है. यहीं से आपका ब्रेन बेटा आपके सारे visual impulses को analyze करता है. Okay, so in visual cortex of brain, the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on memory and experience. तो बेटा एक बात याद रखेंगे, that is the chiasma. Optic chiasma क्या होता है? So बेटा before connecting to the occipital lobe, जो हमारी optic nerve होती है बेटा, वो hypothalamus के सामने ऐसे X-shaped structure बनाती है जिसे हम optic chiasma कहते हैं. क्या कहते हैं? Optic chiasma कहते हैं. Okay. So I hope this is clear to all of you. Now any doubts if you have, sir please suggest any practicing book for biology. बेटा bio के लिए first if you are enrolled in Vedantu batches you will get the तत्वा questions बेटा बहुत ही high fi level के होते हैं. So even most of the questions that are there in NSEJS they directly भिड़ जाते हैं with the तत्वा material that is shared. Okay, so now next option can be your NCERT fingertips. For per chapter, you will get very good summary. You will get flow charts for each and every single chapter. You will get the notes, and you will also get 100 and more than 100 questions from each and every single chapter, which are of very much high importance. Okay, so आप वहां से भी बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो. सही क्लास 10th के लिए भी है क्या? हाँ बेटा, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं ये बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे. एंड अगर बेटा तुम ये सब बोर्ड की कॉपी में लिख के आओगे तो सोचो तुम्हारे जो एग्जामिनर होंगे वो कितने ज्यादा खुश होंगे, कितने ज्यादा इंप्रेस होंगे तुमसे, राइट? ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक. आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया मैंने तुम्हें क्या क्या बताया. तो लेट्स समराइज इट इन अ शॉर्ट मिनट. हमने बेटा पढ़ा कि हमारी ह्यूमन आई में जो आई वॉल है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स, द आउटर फिब्रस लेयर, द मिडल वैस्कुलर लेयर एंड द इनर नर्वस लेयर. सो देन वी लुक्ड एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर नर्वस लेयर, दैट इज द रेटिना. रेटिना में you have the pigmented epithelium. Connected to it you have the photosensitive cells, bipolar cells, ganglion, and from there originates is the optic nerve. देन बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारे रॉड सेल्स हैं एंड कोन सेल्स हैं इन्हीं को हम फोटोसेंसिटिव सेल्स कहते हैं. फोटोसेंसिटिव सेल्स रॉड सेल्स में रोडोप्सिन होता है, कोन सेल्स में बेटा पोर्फायरोसिन, साइनोप्सिन एंड एडोप्सिन होता है. करेक्ट है? उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा कि जब लाइट हमारे रेटिना को स्ट्राइक करती है तो बेटा रोडोप्सिन में ऑप्सिन से रेटिनिन और रेटिनल सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है. दैट ब्रिंग्स आउट सर्टेन चेंजेस इन द प्रोटीन इन द ऑप्सिन, जिसकी वजह से बेटा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है थ्रू दी बाइपोलर न्यूरॉन्स इनटू द गैंग्लिया. गैंग्लिया से फर्दर कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व. तो जो इंपल्स होती है बेटा वो वहां से हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाती है एंड द ऑप्टिक नर्व दे कनेक्ट टू द विजुअल कोर्टेक्स और द ऑसिपिटल लोब और द फोर ब्रेन. राइट? आई होप दिस वाज वेरी मच इजी फॉर ऑल ऑफ यू. तो बेटा इतना कुछ पढ़ाने के बाद अब बारी आती है थोड़े से क्विज़ेस की. राइट? So बेटा this is the first question. So biology class is only for 30 minutes. Guys, don't look at the time. Look at the quality of the content that you are getting. ठीक है, बायो में बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए आई थॉट कि लेट्स कीप अ सिंगल टॉपिक, बट जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा उसको एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे. सो आई एम जस्ट ओनली पिकिंग द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप एनएसएस बायोलॉजी एनएसएजएस के लिए आपको स्पेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए.
we practice some questions as well, and rest जो भी तुम्हें doubts हो, you guys can also ask those doubts from me. Yeah, so okay, solve this question guys. ठीक है, अभी तुम्हें ये बताना है, light striking the retina generates a nerve impulse. Which of the following option correctly describes the path of the light? So you have to tell the path of the light. बेटा मैंने तुम्हें explain भी किया था. ओके चलो बेटा जल्दी से बच्चा पार्टी जल्दी से आंसर दो. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ओके सी. यू हैव टू टेल इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. बेटा पाथ ऑफ लाइट में आपको बताना है. सो व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस? ओके इट शुड बी सी 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 सी. ओके इज इट सी गाइस? लेट्स लुक एट द राइट आंसर. ओके आंसर नहीं है. So guys, for this question, the correct answer should be A. First, you have the photosensory cells, then you have the bipolar neurons, then you have the ganglion cells, and finally you have the sensory nerves. Okay, I'll show you the diagram. यहाँ से तुम्हें clear हो जाएगा. Okay, so बेटा light की direction में कहा है, तो बेटा light कहाँ strike करेगी? It will strike the pigment epithelium, right? It will strike the pigment epithelium. So epithelium से बेटा first you have the photosensitive cells, then you have the bipolar neurons, then you have the ganglion cells, and finally you have the sensory nerve. Okay. So I hope this is clear. The answer should be A. Now let's move on to the next question. Photosensitive compound in human eye is made up of. So आपको बताना है कि जो हमारी आईज में photosensitive compound present है वो किस चीज का बना है. And this question has also been asked in NEET 2016. So this is a very important question. And अगर आप देखोगे तो बेटा कई सारे NEET के क्वेश्चन जो है वो NSEJS में रिपीट होते हैं. और you can also say कि NSEJS के क्वेश्चन NEET के लिए में भी रिपीट होता है. Vice versa, right? ठीक है. So yeah, tell me this one. What should be the right answer to this? Is it A, B, C or D? Which is the right answer guys? Is it guanosine and retinol? It is opsin and retinol. Is it opsin and retinol? It is transfusin and retinol. What should be the right answer? Okay, B. B. Yeah guys, B is the right answer. Opsin and retinol, they make up your rhodopsin which is present in the rod cells, and it is again a photosensitive compound. Next. Which of the following is a correct difference between red cells, cone cells of, okay, it is rod cells guys. This is rod cells. So you have to tell a difference between rod cells and cone cells of a retina. तो आपको rod cells और cone cells के बीच का difference बताना है. Option A, rod cells vision in poor light, cone cells color vision and detail vision in bright light. Option B, rod cells more concentrated in center, cone cells retina evenly distributed all over the retina. Option C, rod cells low in number, cone cells high in number. Your option D, rod cells iodopsin, cone cells rhodopsin. So what should be the right answer to this one? Is it A, is it B, is it C or is it D? I guess this one is very easy. Okay, A. Like students are saying the answer should be A. What about other students? बाकी बच्चे क्या सोचते हैं? Is it A? Is it B? Is it C or is it D? Okay, A. And everyone is saying it should be A. A is the right answer. Guys, rod cell में rhodopsin होता है, cone cell में iodopsin, porphyrin और synapsin होता है. So this is twist, right? हमने count भी देखा था. बेटा rod cells जो होते हैं, they are high in number, 110 to 125 million. Cone cells जो होते हैं, बेटा they are just 6.3 to 6.8 million. So हमें clear है कि rod cells जो हैं, they are higher in number. बेटा ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि रॉड सेल्स जो है दे हेल्प इन विजन इन पुअर लाइट, कोन सेल्स बेटा में ब्राइट लाइट और कॉन्ट्रास्टी कलर्स को देखने में हेल्प करता है. ठीक है, ये पॉइंट अलग है बेटा. रॉड सेल्स जो होते हैं दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि कोन सेल्स जो होते हैं दे आर लाइक अ लिटिल मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रेटिना. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच गाइस. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू गाइस कैन आस्क मी. कुछ पूछने का है तो जल्दी से पूछो बेटा. Okay, so any doubt if you guys have any doubts? Any doubts if you have, you guys can ask me. Else you can also write it in the comment section. I'll reply back to it. Thank you very much for sparing your valuable time, guys. Everyone, just be full of energy and keep on preparing for NSEJS. Best of luck, everyone. Good night. We'll meet in the next class next Saturday at the same time from 5 p.m. to 6 p.m. Take care, guys.